Welcome again. Myself MD Tariq Anwar. I am working as an assistant professor in mechanical engineering department at St. Andrews Institute of Technology and Management. Today I am going to deliver a lecture on the topic that is detailed design of leaf spring and related equation in case of leaf spring. This is the subject, that is mechanical machine design 2, which comes in the sixth semester of mechanical engineering. So I will explain what is leaf spring and what are the equations which are used in leaf spring. So first of all, what is leaf spring? Leaf spring, also known as flat spring. We have seen in automobiles such as trucks, buses, in the rear wheel there will be a number of strips are fixed inside the wheel. This is known as leaf spring. So also known as flat spring, are made out of flat plates or flat sheets which has some thickness. The advantage of leaf spring over helical spring already explained in the last video lecture, that is types of compression spring, or you can say helical spring. This is the topic, that is leaf spring. What is the advantage? Is that the ends of the spring may be guided along a definite path as it deflects to act as a structural member in addition to energy absorbing device. ये क्या करता है? डिफिनेट पाथ फॉलो करेगा, गाइड करेगा और यूज्ड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर इन एडिशन टू एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस. एनर्जी भी एब्जॉर्ब करेगा और स्ट्रक्चरल मेंबर के तौर पर भी यूज़ होगा. Thus, the leaf spring may carry lateral loads, brake torque, driving torque, etc. in addition to shocks. Clear? Different types के क्या होंगे इस पे? ब्रेक टॉर्क जो लगेगा इसको भी एब्जॉर्ब करेगा. ड्राइविंग टॉर्क जब लगेगा ऑटोमोबाइल्स जब मूव करेंगे तो ड्राइविंग टॉर्क इसको भी एब्जॉर्ब करेगा. इन एडिशन टू शॉक. क्लियर? बट compression or helical spring only absorb shocks which are generated during machine functionality. So consider a single plate. I'll explain what is the type of spring or how I will derive the equation for a leaf spring. So consider a single plate fixed at one end and loaded at the other end as shown in figure. This plate may be used as a flat spring. Consider कर लो ये क्या है, फ्लैट स्प्रिंग है. किस टाइप का है? मैंने क्या किया, वॉल में एक प्लेट को फिक्स कर दिया. ठीक है, लोड लगा रहे हैं कहाँ पे, उसके एट द फ्री एंड. तो क्या लोड लगाने से क्या होगा, ये क्या होगा, वाइब्रेट करेगा और इट विल एक्ट एज ए flat spring. So let here I have shown in the diagram, B is the width of the plate, T is the thickness of the plate, L is the length of the place or distance you can say of the load W from the cantilever. कैंटिलीवर टाइप का मैंने फिक्स कर दिया. कैंटिलीवर किसको बोलते हैं? हमने कोई भी प्लेट को या बार को, फ्लैट प्लेट को फिक्स कर दिया वॉल में, और कोई भी फिक्सिंग पॉइंट पे प्लेट में भी वेल्ड कर दो, समथिंग कुछ भी कर दो, वाट एवर यू कैन डू. ठीक है, तो मीन्स दैट हमने क्या किया, फ्लैट प्लेट को फिक्स कर दिया. दिस इज नोन एज कैंटिलीवर बीम. वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड, वन एंड ऑफ द बीम इज फ्री. We know that the maximum bending moment at the cantilever end A is given as M is equal to W into L. कितना होगा, W लोड लग रहा है इस पर, सी दिस डायग्राम. लेंथ कितना है इस बीम का, L. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा इसमें, W into L. So and section modulus, you know the formula. Section modulus is denoted by Z, and it is the ratio of moment of inertia about neutral axis of the member
and distance of extreme fiber from neutral axis. Clear? So I have directly written here, that is I, moment of inertia, and y is the distance of extreme fiber from the neutral axis. So by putting the value, that is, you know the formula, that is bt cube upon 12, because I am taking moment of inertia about t. T is the thickness of the strip or cantilever beam. So I have written bt cube upon 12 upon y is nothing but t by 2. You can refer this diagram to find the value. So after solving, we will get 1 by 6 into bt square, and bending stress in such a spring is given as sigma b or sigma m upon z, moment upon section modulus. So putting the value, moment I know, that is w into l, z value is bt square upon 6. So after arranging the term, we get 6wl upon bt square. We know that the maximum deflection for a cantilever with concentrated load at the free end is given by a formula you have already studied in strength of material. What is cantilever beam, and what is the deflection formula, what is the bending stress. Clear? So I am directly giving you the equation. Clear? So delta is given as, in case of cantilever beam, WL cube, or delta is the deflection of cantilever, WL cube upon 3EI. A is the Young's modulus. So you can write WL cube upon 3EI. I का value you can put here. So after cancelling the common term, the 3 से 12 कट जाएगा, 3 4 the 12. So we will get 4WL cube upon EBT cube. This is equation number 2. First one was equation number 1. This is equation number 2. So putting the value here, that is sigma, you all know that 6WL upon BT square. So putting this value in this equation and simplifying, we will get as delta value is 2 sigma L square upon 3 ET. You have to remember this formula. Now I'll solve, or I'll derive another equation related to this basic formula, that is bending stress and deflection in the cantilever, because I am considering here this is the flat spring in case of cantilever, or you can say type of cantilever beam which is used as a flat spring. So it may be noted that due to bending moment the top fibers will be in tension. क्या होगा, टेंशन में होगा. लोड जब ऊपर लगेगा तो क्या होगा, टेंसाइल कंडीशन में होगा और टेंशन में होगा. And the bottom fibers are in compression, but the shear stress is 0 at the extreme fibers and maximum at the center. This is the basic of shear stress distribution or bending or tensile or compression in the beam. You can refer strength of material in case of any doubt. Clear? So as shown in figure 23.26, hence the analysis, both stresses need not be taken into account simultaneously. We shall consider the bending stress only. Here I am considering bending stress. So see this figure, it will be more clear to you. First figure is, this is the left side diagram is, क्या है, प्लेट का डायग्राम है. टोटल कितना है इसका थिकनेस प्लेट का, T. तो ऊपर वाला कितना होगा, रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस मेंबर. तो अपर वन इज T/2, लोअर वन इज T/2. अपर वन इज इन टेंशन, लोअर वन इन compression. So bending stress diagram variation or bending stress distribution, this is the middle diagram. Last one is shear stress distribution diagram, which will be maximum at the center. Bending stress will be maximum at the top fiber and at the bottom fiber, but in reverse direction, or you can say एक compressive होगा एक टेंसाइल होगा.
ठीक है. So cross section of a plate, A part figure number A, B part is bending stress diagram, C part is shear stress diagram. Now if the spring is not of cantilever type but it is like a simply supported beam, अगर हमने स्प्रिंग को क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम के शेप में कंसिडर किया. क्लियर. with length 2L, length of the beam is 2L and load acting on it is 2W in the center as shown in figure 23.27. I have shown here, see the figure here. B is the width, T is the thickness, W1 is the load acting, that is 2W, AB is the end of cantilever, 2L is the length of this cantilever, this is L1 is equal to 2L. So maximum bending moment in the center, center पे कितना होगा, you have to find moment. कैसे find out करेंगे आप, you have to stand on the center, just near the center and see on the left side. क्या होगा, due to this load 2W there will be a reaction on both side A and B, that is W and W. So you are standing on the center, so load is acting, that is W, or reaction is W, length is L, so maximum bending moment at the center will be W into L, that is load into perpendicular distance. So I have written directly M is equal to W into L, and section modulus you all know that is after solving we will get BT square upon 6, and bending stress is given as sigma is equal to M upon Z. So putting the value WL upon BT square upon 6, we will get 6 WL upon BT square. Clear? Now we know that maximum deflection of a simply supported beam loaded in the center is given by, ये फार्मूला ये आप लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, in strength of material. Clear? It is given as WL cube upon 48 EI in case of simply supported beam when the load is acting on the center. So here W is W1, L is L1. Clear? So putting this value already explained in the previous slide, that is in place of W1 you can write 2W and L1 2L. So we will get, after simplification we will get WL cube upon 3 EI. In this case W1 is 2W and N1 is 2L. I have written here. So from above we see that a spring such as automobile spring, semi-elliptical spring with length 2L and loaded in the center by a load 2W may be treated as a double cantilever. If the plate of cantilever is cut into a series of n strips, number of strips of width B, and these are placed as shown in the figure, then equation 1 and 2 may be written as. क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है, स्प्रिंग है, इसको हम क्या कर, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में कट कर दे रहे हैं और एक दूसरे को प्लेस कर रहे हैं. ठीक है. इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से, दैट इज सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस इज इन केस ऑफ प्लेट और स्ट्रिप्स के फॉर्म में जब हम ले लिए उसको तो क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना लगेगा उस पर, एक पे बेंडिंग स्ट्रेस 6WL अपॉन N BT स्क्वायर and delta will be 4WL cube upon N E BT cube. So after solving we will get 2 sigma L square upon 3 ET. This is equation number 3 and equation number 4. See this diagram, that is here number of strips, here strips, there are 3 strips, length is L and load is W. B is the width of the plate, T is the thickness of the plate. Clear? So from this diagram it will be clear leaf spring are in the form of number of strips. So if a triangular plate is used as shown in figure 23.9a, the stress will be uniform throughout. If this triangular plate is cut into strips of uniform width and placed one below the other,
एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के नीचे, एज शोन इन द फिगर 23.9b टू फॉर्म अ ग्रेजुएटेड और लैमिनेटेड स्प्रिंग। देन सी दिस फिगर हेयर, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्रिंग लगाया, बट क्या है उसके स्टेप्स में लगे, मतलब एक के बाद छोटा होते गया, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, चौथा छोटा, इस टाइप से होते गया। सो in this case here, see the figure here, W is load acting on this spring, L is the length, T is the thickness of this plate, and see another diagram on the right side, that is here number of plates are, or you can say strips are 4 in numbers. So diagram is in this case is triangular strips, that is P is N into B, जो टोटल थिकनेस है क्या है, n इंटू बी, बिकॉज आई एम कटिंग दिस ट्रायंगुलर सेक्शन इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड प्लेसिंग दिस स्ट्रिप्स वन अबव द अदर, और यू कैन से वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक. दिस इज इट विल बी क्लियर फ्रॉम डायग्राम बी. I have shown with dash line which is red in color, that is showing below the upper part. This is the drawing concept. So we can write this as sigma is equal to 6 WL upon NBT square, and delta is equal to, or you can say deflection, is nothing but 6 WL cube upon NEBT cube. After solving we will get sigma L square upon ET. This is equation number 5 and 6, where n is the number of graduated leaf. Already explained n क्या है, number of leaves. A little consideration will show that by the above arrangement the spring becomes compact, so that the space occupied by the spring is considerably reduced. हम क्या करेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगाएंगे, तो क्या होगा, इससे स्पेस हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर. दिस इज द टाइप ऑफ एलिमेंट. When bending stress alone is considered, the graduated leaves may have zero width at the loaded end, but sufficient metal must be provided to support the shear. जब लोड लगेगा तो क्या होगा, स्ट्रिप शेयर करेगा. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द शेयर. देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी. क्या करते हैं हम, दो लीफ लगाते हैं एक ही लेंथ का. It becomes necessary to have one or more leaves of uniform cross section extending clear to the end. पूरे बराबर साइज के top 2 leaves. We see from equations number 4 and 6 that for the same deflection the stress in the uniform cross section leaves, that is full length leaves, is 50% greater than the graduated leaves. Assuming that each spring element deflects according to its own elastic curve. क्लियर. क्या होगा, ऊपर वाला लीफ जो है वो सेम साइज़ का दो लीफ लगाएंगे. किसके लिए लगाएंगे, शेयर को सपोर्ट करने के लिए. क्लियर. तो ये क्या होगा, 50% ग्रेटर देन इन ग्रेजुएटेड लीफ. इसमें जो फुल लेंथ लीफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस विल बी मोर. कितना ज़्यादा होगा, 50%. If the suffix F and G are used to indicate the full length or uniform cross section and graduated leaves, then formula is written as F किसके लिए डिनोट कर रहे हैं हम, फुल लेंथ लीफ के लिए. G किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ग्रेजुएटेड लीव्स के लिए. तो फार्मूला इज गिवन एज सिग्मा F इज इक्वल टू 3/2 टू सिग्मा G. क्लियर हो गया. 50% मतलब 1.5 सिग्मा G. 3/2 इज नथिंग बट 1.5. 50% स्ट्रेस क्या होगा, फुल लेंथ लीव में ज़्यादा होगा. सो यू कैन राइट द फार्मूला यूजिंग दिस 6 WFL. F is denoting full length leaves. NF BT square is equal to 3/2. Putting the value here, nothing I am doing. 6 WG into L upon NG BT square. क्लियर. सिग्मा G का फार्मूला, यहाँ सिग्मा G का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, सिग्मा F का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं. और यू कैन राइट और सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, WF अपॉन NF इज इक्वल टू 3/2 WG अपॉन NG. और फाइनली देयरफॉर यू कैन राइट
or we can write WF upon WG, weight on full length leaves and weight on graduated leaves, is equal to 3 full length leaf, NF is full length leaf upon 2 graduated number of leaves. Clear? This is known as equation number 7. So एडिंग 1 टू बोथ साइड वी हैव, क्या कर रहे हैं हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम 1 ऐड कर रहे हैं. डब्ल्यू एफ अपॉन डब्ल्यू जी प्लस 1 इज इक्वल टू 3NF अपॉन 2NG प्लस 1. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग we will get WF plus WG upon WG is equal to 3NF plus 2NG plus upon 2NG. Therefore you can write by arranging the term, that is WG is equal to 2NG, इधर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2NG ऊपर में आ जाएगा, अपॉन 3NF प्लस 2NG नीचे चला जाएगा, WF प्लस WG क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो यू कैन राइट फाइनली WF प्लस WG क्या है, टोटल लोड W जो एक्ट कर रहा है ऑन द स्प्रिंग, WF मतलब फुल लेंथ पे जो एक्ट कर रहा है, WG जो ग्रेजुएटेड लीफ पे एक्ट कर रहा है. क्लियर? सो यू कैन राइट WF प्लस WG इज इक्वल टू W. क्लियर? सो WG इज इक्वल टू 2NG अपॉन 3NF प्लस 2NG इंटू W. दिस इज इक्वेशन नंबर 8, where W is the total load on the spring, that is WG plus WF, already explained. WG load taken by graduated leaves and WF load taken by full length leaves. From equation 7 we may write WG upon WF is equal to 2NG upon 3NF, or we can write adding 1 on both sides, WG plus WF plus 1 is equal to 2NG plus 3NF plus 1. Clear? So WG plus WF upon WF is equal to 2NG plus 3NF upon 3NF. Clear? So WF value will be 3NF upon 2NG plus 3NF into WG plus WF. Clear? Is equal to 3NF upon 2NG plus 3NF into W. Same is the case. This is equation number 9. So WF अगर फाइंड करना है आपको तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है? अगर WG फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी एक्सप्लेन, सी हियर, WG फाइंड आउट करना है तो ये इक्वेशन नंबर 8, एंड WF फाइंड करना है ये फार्मूला यूज़ करेंगे. क्लियर हो? करेक्ट. नाउ WF का वैल्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर. इक्वेशन नंबर 9 कंटिन्यूइंग. बेंडिंग स्ट्रेस फॉर फुल लेंथ लीव्स इज गिवन एज सिग्मा F इज इक्वल टू सिग्मा 6 WF into L upon NF BT square. So putting the value of WF in this equation, you will get final expression as sigma F, or a stress in full length leaves is given as 18 WL upon BT square in the bracket 2 NG number of graduated leaf plus 3 NF, that is number of full length leaves. Since sigma F is equal to minus 3 by 2 sigma G, therefore you can write sigma G is equal to, putting the value of in this equation from the last, you can take from the data from last equation, that is sigma G is equal to 2 by 3 sigma F. So putting the value in this equation 2 by 3 18 WL ऑलरेडी सॉल्व हेयर. सिग्मा एफ का वैल्यू क्लियर है. सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. फाइनली वी विल गेट एज सिग्मा जी, और स्ट्रेस इन ग्रेजुएटेड लीव इज गिवन एज 12 WL अपॉन BT स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2NG प्लस 3NF. द डिफ्लेक्शन इन फुल लेंथ एंड ग्रेजुएटेड लीव इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 6, दैट इज डेल्टा, that is deflection in the spring, or you can say flat spring or leaf spring, 2 sigma F into L square upon 3 ET. So value is putting sigma F का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम in this equation. You will get delta value is 12 WL cube upon EBT cube in the bracket 2NG plus 3NF. So you can find out delta value, or you can say deflection
in the leaf spring by this equation. Clear? Now we'll discuss last in this video lecture series, that is length of leaf spring. The length of leaf spring leaves may be obtained as discussed below. Let 2L1 क्या है? Length of span or overall length of the spring. L, small l, width of band और distance between center of U bolts. इसमें U bolts लगे रहते हैं लीफ स्प्रिंग में. क्लियर? सो टू फिक्स द नंबर ऑफ लीव्स ऑफ लीफ स्प्रिंग, क्या करते हैं? यू बोल्ट लगाते हैं हम इस टाइप से, क्या करेंगे? फिक्स करके रखता है उसको, पूरे स्प्रिंग को, स्ट्रिप्स को, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को. तो एल, विड्थ ऑफ द बैंड और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ यू बोल्ट, इट इज़ द इनइफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. इसका कोई यूज़ नहीं होना है. एन एफ, नंबर ऑफ फुल लेंथ लीव्स. एन जी, नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स. एन इज द टोटल नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन जी. And we have already discussed that the effective length of the spring is given as 2L is equal to 2L1 minus L. ये L इसमें माइनस हो जाएगा when band is used. ये कंडीशन याद रखना है आप. when band is used and is equal to 2L1 minus 2/3L when U bolt is used. तो बैंड भी यूज़ होता है लीफ स्प्रिंग को पैक करने के लिए, फिक्स करने के लिए अपने पोजीशन पे, और कभी कभी U बोल्ट भी यूज़ होता है. ये दिस इज़ द फार्मूला for the case when band is used and when the U-bolt is used. It will be noted that when there is only one full length leaf, that is known as master leaf only, then the number of leaves to be cut will be n, and when there are two full length leaves including one master leaf, top वाला leaf, उसके बाद एक और leaf है, then the number of leaves to be cut will be n minus 1. If a leaf spring has two full length leaf, then the length of the leaf is obtained as follows. Clear? करेक्ट है. जब एक ही लीफ होगा तो क्या करेंगे? n से हम डिनोट करेंगे, लीफ को कट करेंगे n नंबर ऑफ में. जब एक से ज़्यादा दो होगा तो क्या करेंगे? विल बी n minus 1. क्लियर? नाउ we'll discuss last point of this topic, that is length of smallest leaf given by the formula, that is effective length, already explained in the last slide, given as effective length upon n minus 1 plus ineffective length. इसमें l जुड़ जाएगा, स्मॉल l. लेंथ ऑफ नेक्स्ट लीफ कितना होगा? इफेक्टिव लेंथ अपॉन n minus 1 इंटू 2 प्लस इनइफेक्टिव लेंथ. सिमिलरली लेंथ ऑफ n minus 1th लीफ at effective length upon n minus 1 into n minus 1 plus ineffective length. The nth leaf will be master leaf and it is of full length since the master leaf has eyes on both side. यहाँ क्या होता है? लीफ को क्या करते हैं? रोटेट कर देते हैं. रोटेट मतलब क्या होता है? स्पाइरल टाइप का हो जाता है, घूम जाता है वहाँ पे. दिस इज नोन एज आई. द nth leaf will be master leaf and is of full length since the master leaf हैज़ आइज ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर दोनों साइड से हम क्या करते हैं? घुमा देते हैं. दिस इज नोन एज आई. लेंथ ऑफ मास्टर लीफ इज गिवन एज 2L1 प्लस पाई एज d प्लस t डायमीटर एंड t इज़ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप इंटू 2, क्योंकि दोनों साइड में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर d इज़ द इनसाइड डायमीटर ऑफ आई, जो रोटेट करने के बाद जो इनसाइड डायमीटर बना. t इज़ द थिकनेस ऑफ मास्टर लीफ. The approximate relation between the radius of the curvature r and the camber y of the spring is given by the formula r is equal to L1 square upon 2y. The exact relation is given by y in the bracket 2r plus y is equal to L1 square, where L1 half span of the spring. लीफ स्प्रिंग का जो हाफ है उसको L1 से डिनोट करेंगे. ऑलरेडी एक्सप्लेन 2L1, तो इसमें हाफ को क्या करेंगे? L1 से. The maximum deflection delta of the spring is equal to the camber y of the spring. So these are the different types of formula which I have already derived. You have to remember these formula to solve the problem in case of Ng, Nf and sigma g, sigma f, delta deflection in the spring when the band is used and when the U-bolt is used. So you have to refer these formula to solve the problem. You can directly solve, or in data book in most of the cases sorry,
formula is given in the data book. You can directly see data book, and if formulas are available in the data book, no need to remember this formula. So I am finishing my topic. Thank you guys.